सुपर हीरो, माइथोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक, रिलीजन, डिस्टोपिया, पंजाबी गाने, स्टॉर्म ट्रूपर, सब इन अ गैलेक्सी फार फार कंफ्यूज्ड। Hey all, my name is Acharita. Welcome back to my channel जहाँ पर we've got reviews and hey भगवान so many interviews। आ जाओ अभी बात करते हैं नाग अश्विन की कल की 2898 AD के बारे में। It's now in movie theaters। एक नया युग आ रहा है। महाभारत की माइथोलॉजिकल कहानियां लेकर फिल्म बनाना is a mammoth challenge, but I would imagine a tempting one because the epic lends itself to adaptation in the most amazing, most malleable ways. Futuristic बना दो by adding nuclear warfare, contemporary बना दो राजनीति की तरह, श्याम बेनेगल ने कलयुग बनाई थी, and of course तरह तरह की डायरेक्ट फिल्में हैं, टीवी शोज हैं, and because of how vast this epic is, adapt करते हुए imagination जितनी दिशाओं में दौड़ाना चाहो वो भी मुमकिन है। Now, कल की 2898 AD isn't an interpretation of the Mahabharat per se, but Nag Ashwin has pivoted from one moment and he spun many tales in many directions. You know, I was actually thinking about it and I recently spoke about it। अगर आपने वीडियो देखा हो, यहाँ पर लगा देते हैं कि साइंस फिक्शन क्यों बनाना और देखना इतना पसंद है हमें, क्योंकि एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं इस जॉनर के माध्यम से। जो प्रॉब्लम्स आज हैं और तेजी से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं, उनसे जूझने के उपाय अब अगर हाथ में नहीं है तो इमेजिन करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश होती है साइंस फिक्शन में। स्मगलर्स और करप्शन से आम आदमी को बचाता है मिस्टर इंडिया। मैट्रिक्स में जो एआई और मेटावर्स जैसी चीजों की चेतावनियां थी, अब वो आंखों के आगे सच होती दिखाई दे रही हैं। So, keeping this in mind, the central conflict of a film like Kalki is seemingly drawing parallels with a liberal society's warnings of upcoming fascist state, जहां repressive and all-powerful governments के खिलाफ लड़ने के लिए underground militias की जरूरत पड़ने वाली है। The film makes it a point to tell you that this in fact is happening on Earth. An early montage here shows you all the evils rampant इस दुनिया में। कुछ लोग नाजी सल्यूट करते दिखते हैं, कुछ डिफॉरेस्टेशन की वजह से भूखे मर रहे हैं, कुछ गुंडे बच्चों और महिलाओं को, औरतों को उठाकर लेके जा रहे हैं। The squelching of a little green leaf and a flower underfoot is a clear metaphor for the destruction of nature and innocence in a war-torn world. The rallying cry of the resistance group, which is called the rebels, is for tomorrow. यानी इस फिल्म में ह्यूमैनिटी इस कगार पर है कि शस्त्र उठाने पड़ रहे हैं लॉज और लीगैलिटीज के खिलाफ। तो ये लोग टेररिस्ट कहे जाएंगे या स्वतंत्रता सेनानी? However, despite inadvertently raising these questions, I'm not sure Kalki 2898 AD really wants to. The screenplay is unclear कि इस सब का end goal क्या है. Granted, this is only the first part of a proposed franchise. The overused and frankly now outdated term cinematic universe is flashed boldly as end credits roll. But for the life of me, I couldn't figure what this 3-hour long film, nearly 3-hour long film was saying or trying to make me feel. देखो, ये फिल्म है ambitious attempt at a dystopian epic, but every idea it conceives is thrown at its viewers with brute force without much care to put it in a cohesive narrative that breathes and expands with any rhythm. महाभारत के युद्ध के सीन्स में अमिताभ बच्चन इस कदर de-aged हैं कि the sequence almost looks like it might be animated until you realize that it's live action as other actors show up to deliver dialogue. Oh, and yes, people keep showing up काफी periodically. Directors, actors, guest appearances that are so unserious they take you out of the film and they remind you how much this feels like watching a 2018 superhero Guardians of the Galaxy-esque movie. Chaos and destruction का promise है, पर यकायक characters break into song and dance. दिलजीत दोसांझ का एक पंजाबी number cuts away to serene French melody abruptly. Notably, in one extended and entirely inexplicable sequence, Disha Patni and Prabhas sneak onto the top floor of an inverted pyramid that is known as the complex. On this floor, they find a paradise, mountains, fruit-laden trees and beaches. As Disha returns from a sexy swim, the two chance upon discarded fancy clothes. Then they magically find a car-type vehicle, a gala to go to, mind you, within 10 seconds. Now, a logical brain would imagine that these renegades now would know not to draw attention to themselves, but और बस 5 सेकंड में आदत से मजबूर हमारे हीरो हीरोइन कोरियोग्राफ्ड डांस में पूरी पार्टी को लीड करने लग जाते हैं. They are caught and promptly thrown out. This, by the way, is the last we see of Disha. The film winks at you too much. Unclear and unsure whether it wants to be taken seriously or not. In a post-apocalyptic film, the natural progression, I guess, would be that now that we know that this paradise exists, how to return this abundance to its rightful haqdars, the common janta.
However, इस कॉन्फ्लिक्ट पर फिल्म पहुंचने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती और पूरी तरह से डिवर्ट हो जाते हैं हम अश्वत्थामा की रिसर्जेंस की ओर। कैसे ये 6000 साल पुराना महापुरुष अब लौट आया है एक गर्भवती औरत को बचाने फॉर रीजंस यू विल फाइंड आउट। While भैरव द बाउंटी हंटर also wants this woman to win his prize money. आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। हर हालत में रुकना ही होगा। सबके रास्ते जुड़ने में वक्त और दीपिका पादुकोण दोनों जाया हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में नाग अश्विन ने कहा था कि दीपिका का रोल एज द एफोरमेंशन्ड गर्भवती महिला इज समथिंग नो मेन स्ट्रीम लीड हैज डन बिफोर एंड विल बी क्वाइट अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। Sorry to break this to you, this statement is far from the truth. Let alone no other mainstream lead. Khud Deepika has played a woman caught between powerful men interested in regulating control over female bodies. Unfortunately, for the most part, the actor is relegated to looking confused, scared, and helpless as the world around her crumbles. Dare I say, Kalki might have been a bigger waste of her time and immense talent than Fighter was. Things get very interesting when Shashwata Chatterjee's unintentionally hilarious take on a fascist commander gives way to Kamal Hassan, who is Supreme Yaskin. भगवान एक ही सुप्रीम यास्किन। I don't know what this word means, but it sounds like Yas Queen, and I'm here for it. Because Kamal Hassan provides some of the film's more compelling moments. He's so good. However, who Yaskin is, how he got to be the state he's in, and what his goals are secrets that Part 1 refuses to reveal. The film expects us to accept the barren world as a given, assuming we've seen enough apocalyptic movies to fill in the gaps. Yet the lack of clarity about what is at stake if Yaskin wins is frustrating. We are told repeatedly that stopping Yaskin is crucial. But like why? Ashwatthama को इस सुमति को बचाना है. To what end? Undeniably, scenes, moments और visuals derivative हैं of काफ़ी कुछ you've seen before. Dune के spice की जगह इंडियन सिनेमा का मसाला है, लेकिन if that is your jam, देखा ये थिएटर में लगी हुई है. So, और उसके लिए 1 to 10, Kalki 2898 AD is one Anna Ben, who I last saw in P.S. Vinod Raj's incredible Kottakali at Berlin, is impressive as a lady rebel Kyra. पर उनको भी लंबा monologue दे दिया बोलने के लिए about the beauty of love and partnership, which is so obviously only a setup for the rest of this sequence. It's tragically basic. इस हफ्ते there is also a Quiet Place Day 1, जिसकी cast का interview that I did from New York. You can go watch right here. As always, my name is Sucharita. Thank you for stopping by.